much as they would want to follow it. But on the other hand, the state has basically said that we will actually ensure that, we will encourage that people do follow their religion in true letter and spirit. That's why under 25, you have been given a right to profess, propagate and practice your religion, follow your conscience. And under 26, even the religious denomination has been accorded certain rights. That is, a right to establish their institutions for charitable purpose. Then they can have and they can acquire movable, immovable property, and they will have a right to practice their religion. So which means that 25, 26 is very individual concentric, which gives you the right to practice, follow, propagate and even profess your religion. Now comes 27, 28, which is the state perspective towards the view of secularism. While we were doing the preamble, I had already had a discussion with you and I told you that India's view of secularism is very clear cut. The Indian secularism tells us that the state has to be non-religious, which means you just have to listen to the point of view where the state cannot have anything to do with religion. State cannot be seen to be holding any one religion for itself, which means there are so many countries around the world which have a state religion. If you see, for example, if you see Pakistan as a country, Pakistan has a state religion, which means Pakistan's state religion is Islam. You can't have a head of state in Pakistan who is not a Muslim or is not following Islam. It's as clear as that, which means fundamentally most of the prominent positions in Pakistan, they would be reserved on the basis of religion. Similarly, countries in the Gulf, they'll have a state religion. Okay, so you are talking about a state which has a religion, but India is a state, Indian state is a state which we call as a secular state. But what is this state like? The state has no religion of its own. So state says that they have no religion, but it does not mean that state is anti-religion. Our view of secularism was very different from the point of view that even though we may not have our own religion in terms of a state religion, but that would not mean that the state would be anti-religious, which means the state would be against religion. On the other hand, the state would be not having a religion without being anti-religion, but we say the premise of our secularism is that state would treat all religions equally, which means for the state, all religions are equal. So state is going to keep equal distance from all religion on the basis of some principle. So principled equal distance is what we say. Plus the state also ensures that it tries to promote all religion and all religious activities, does not favoring one against the other. That's the view of Indian secularism. So we have looked into the individual view of religion as per India's constitution. That is, individually we are free to follow our conscience. Individually we are free to follow our religion in terms of practice, profess, propagate, plus then some denominational rights where they have freedom to perform certain freedom in terms of religious practices as denominational rights, in terms of some property rights, in terms of denominational rights. But after that, we also now have to understand these concepts from the perspective of the state. How is it that the state says that it will be not having any religion, but still the state is going to promote for all the religion? How is it that we understand these concepts? So we have to just understand this from these two vital articles in terms of perspective is what we say, Article 27 and Article 28, 27 और 28 article. ये अब हमारे लिए थोड़ा important बनता है because of these two very significant concepts. Because 25 has already given us the right for our religious practices. Even if we are following a denomination, then we got a right. So 25, 26 is more like a right. 27 is not. 27, 28 is more about what the state can do or what the state cannot do, in terms of what can be understood as like the state being able to do certain things and what we may think that state may not be able to do certain things. So first we'll look at Article 26 of the Indian Constitutions. So 26 is about,
the state perspective, and for 26 we say that it is about the 27, sorry. So 27 is about the state perspective, and we are looking at the state perspective from the point of view of how nobody can be forced to pay any tax for religious promotion, promotion of any religion. So how do we understand that concept? Because this is about state. So state cannot tax us, which would be a religious tax for the promotion of any religion, because state has no religion. So state cannot tax you, where the state would say that, we have to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion. तो पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए राज्य आपको विवश नहीं कर सकता कि आपको किसी तरह का कर देना पड़े राष्ट्र को, राज्य को, है ना. यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉम्पेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. जो टेक्निकल शब्द है जो हमें याद रखना है वो है एनी पर्टिकुलर रिलीजन. एंड the right that you have is that you have a right not to pay any tax, or rather I should say the state shall not force you to pay any tax for the promotion of any particular religion. इसलिए इसका heading क्या होता है? Freedom not to pay tax or any tax for any particular religion or for the promotion of any particular religion. So 27 जो पहला पार्ट हमारा है ये हम देखते हैं. It is about freedom not to pay any tax. तो केवल टैक्स की मनाही है, ये ध्यान रखना है. इसलिए आपने नहीं देखा होगा अपने देश में कि कोई ऐसा रिलीजियस टैक्स कभी सरकार ने लगाया हो, where the tax money can be used for promoting any religion or any particular religion. हाँ, टैक्स कलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग. टैक्स कलेक्शन का पैसा सरकार यूज कर सकती है फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, बट नॉट एनी पर्टिकुलर, ऑल रिलीजन. सो इफ द गवर्नमेंट विल मेक, सपोज will start a program where they will say that we will be taking people to some Char Dham Yatra, suppose, free of cost. Then the same government will also be running a program which will take people from other religious groups to their sacred places. So they'll be taking Sikh also in a religious pilgrimage, they'll be taking Jains also in a religious pilgrimage, and they will also be taking other religious groups into, like Christians, Islam, Muslims, to their religious pilgrimages. So it is like state will be using the proceeds of taxes for the promotion of all the religion, but not for any particular religion. That's the meaning of it. And state will never ask you to pay any tax which should be used for promotion of any particular religion. Lekin proceeds of taxes, state can use the money for promotion of religion, but all the religion. So state will construct, suppose, corridors. अभी बनाया ना बहुत सारे corridors. राज्य ने बनाया है ना corridors. रिलीजियस कॉरिडोर्स बने, काफी जगहों पर बने, मंदिरों में बने हैं कॉरिडोर्स, एंड इट इज स्टेट ने स्पॉन्सर किया वो पैसा. सिमिलरली यू कुड आल्सो से कि स्टेट माइट, इफ अ रिलीजियस प्रैक्टिस में स्टार्ट, जैसे कावड़ यात्रा शुरू होती है तो स्टेट would have some helicopters which would be showering petals on the kavariyas who are actually taking that kawad yatra. So again, state money is being used for promotion of religion, but here the larger issue is not any particular religion. It has to be used, but for the promotion of all the religion. That's the point we need to understand from Article 26. So what a freedom you have, because this is actually, you could say that I need to have some fundamental rights with regards to religion. 25, 26 is your fundamental right, what you can do. 27 is about what state cannot do. It's basically negative in nature, because here the article and its statement says that the state cannot compel anyone to pay any tax for the promotion of any particular religion. That's what you see in Article 27 of the Constitution. So the reading of it tells us you have a freedom not to pay any tax for the promotion of any
particular religion. Okay, so you have a freedom not to pay any tax for the promotion of any particular religion. And again, which means that this is like the true spirit of Indian secularism. Why true spirit of Indian secularism? Because India's idea of secularism is very different from the Western idea of secularism. Western idea of secularism stands upon the strict separation of state and church and state and religion. ये पढ़ा था हम लोगों ने. तो ये वेस्टर्न मॉडल है. हमने अपने बारे में क्या कहा था? Ours is more like a model where, so our wall is not strict, our wall is what? Porous. Okay, and what is the basis of our spirit of secularism? The principled equidistance and promotion of all the religion. You know, and I told you that if you try to derive this idea, what is it that you are going to refer to? The principles that comes from our Upanishads. What is that? Sarvadharma Sambhav, which means we have this model of Indian secularism that believes in equal treatment towards all religion. That is what I have stated. Now, where do you realize this idea? Reading the Indian Constitution. This is 27 and 28. 25, 26 से भी ये realize नहीं होगा. 25, 26 तो आपका right है कि आप क्या कर सकते हैं. वहां से हमें अभी state क्या करेगा ये तो पता नहीं था. 27, 28 is that article which gives you this impression that this is a secular state, because A, the state does not have anything to do with religion, because the state has no religion, and B, what the state is doing, it is trying to promote all the religion and not any particular religion. So therefore the first thing is that you are completely left from being charged any tax, which is a tax that will go, the proceeds of which will go for the promotion of any particular religion. तो कोई religious जैसा कोई tax आपको कभी राज्य नहीं impose कर सकता. So 27, 28 is therefore, I would say, the notion of, because it is state perspective, but 27, 28 को combine अगर पढ़ें, तो that shows the true spirit of Indian secularism. तो हमने जो पढ़ा है अब तक कि हमारा सेक्युलरिज्म का मॉडल क्यों अलग है, वो हमें 27, 28 को पढ़ के समझ में आएगा. We'll be understanding that by the reading of article 27 and 28. Okay, so what does 27 says? 27 को समझ कैसे सकते हैं? Public money. Public money is what money? Our money, which is like the state money. And what does how public money has to be used? It cannot be used for the promotion of, और ये टैक्स किससे होता है? ये किसको राइट मिला है? ये दिस इज फॉर सिटीजन, है ना, ये नागरिक, ये सिटीजन शब्द लिखा हुआ है इसमें. सो पब्लिक मनी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द promotion of any particular religion. So public money cannot be used for any particular religion. So फायदा क्या है हमें? We have got a freedom not to pay any tax for the promotion of any particular religion by the reading of article 27 of the Indian Constitution. ठीक है. So in simple terms, it means that any tax that the government might collect, so whatever is the proceed out of that tax, X amount, Y amount, whatever it is, that amount that proceeds from the tax cannot be used for any particular religion. If it has to be used, it has to be used for the promotion of all the religion, but not any particular religion. That's what it is. And plus, what you need to understand, you are not going to be taxed anything that will be a religious tax. एक धर्म और धार्मिक जैसा कर राज्य आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता. बट इसका लार्जर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि public money cannot be used to promote any particular religion. That is why what you constantly see in our country, the public money is definitely used, but it is used to promote all religion, you know, for all religious activities, for different religious activities. So there are multiple religions which exist in our country, and therefore the state tries to ensure that
the state is able to spend money from its own tax collection tax base. So we could say that the state would try to promote all the religion, because in our country the state thinks that religion is a very positive idea. It has a very positive impact on the people of this country, and so religion has got a very positive role as far as your life is concerned. Religious influence is very positive. So we don't believe in strict wall of separation. Those countries where they see religion as if they are somehow impeding the progress of the society, their religion is like exploitative of the individual, so they want to dissociate the public from religion, that is the state from the religion. But in our country the idea is just the opposite. We don't have such a legacy. In our country largely religion is understood to have a very positive influence, a very positive impact on the people. So in our country the relation with state and religion is also very, very positive. But as per our secular constitutional view, it is very clear, but it cannot be partisan, which means since the state will not have any state religion, so state also does not have to promote any particular religion only. The state is going to promote all the religions, not any particular religion. ठीक है? लिखिए. It means that, next point में लिखिएगा, it means that no person shall be compelled to pay any tax the proceeds of which तो 27-28 भी सिटीजन सेंट्रिक तो नहीं है ना. सिटीजन सेंट्रिक क्या क्या था, 29-30 तो है ना. हाँ, बट ये 27-28 में पर्सन होगा. 25-26 इज सिटीजन, ये पर्सन ही है. नो पर्सन से नो पर्सन लिखा, पर्सन को अंडरलाइन कर लो, कंफ्यूजन ना रहे. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच, अंडरलाइन द वर्ड पर्सन, एंड पर्सन मींस citizens and non-citizens. The proceeds of which are to be used specifically for the promotion or maintenance, specifically for promotion or maintenance of any particular religion. Next point. So it means that the public money cannot be used for any particular religion, full stop. However, it can be used for promoting all the religion. Promoting all the religion. Now, under Article 27, there is another concept which is there. What is prohibited is tax, है ना? Fee is not prohibited. ठीक है? तो ये टेक्निकल शब्द का अंतर समझना है. Tax is prohibited, but if there is a fee which is levied by, suppose, any state temple authority which is also controlled by the state, so can they levy the fee? Because state can't do it, but fee can be levied. The court have also recognized it, because fee is what? Different from tax. When do you pay a fee? When you avail a service, है ना? आपने कोई सर्विस अवेल किया तो आप उसके लिए फीस देंगे, तो फीस कैन बी लेविड, बट टैक्स कैन नॉट बी लेविड. सो इसलिए इसमें नोट करना है कि टैक्स इज प्रोहिबिटेड बट फी इज नॉट प्रोहिबिटेड. ओनली tax is
prohibited under article 27. तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर आपको फीस देना पड़ता है, which is more like a fee that you are paying for availing certain services when you are there in the pilgrimage or when you are there in the temple or any other religious place. So that is definitely allowed. Why? Because fee से क्या होता है? Fee से you are actually controlling the secular administration of the religious place. It's not interfering with any religious activities. When a fee is charged, so what do? They arrange some kind of a special, whatever fee you have paid for whatever kind of darshan, so they will arrange you for that. So they are not directly interfering with anything to do with the worship or anything to do with religious practice. This is like other activities. They are controlling, they are managing how people will move, what kind of service if people have bought, then how to deliver those services. So this is more like a non-secular activity. इसलिए fee is allowed. Fee में कोई दिक्कत नहीं है. Fee is different from tax. और fee क्या होता है? जो वहां जाएंगे वही fee pay करेंगे. But when you say there is a tax, then tax applies on everyone universally. So tax is prohibited, but fee is not prohibited, because when you pay a fee, you also avail a particular service. So you're very well knowing it, that you want a service, therefore you are paying a fee for it. And that's fee is therefore used for non-secular activities. They are managing, controlling the non-secular administration of the religious places. Because of that, you could say that this is Article 27, which is trying to help us understand, which means that public money has to be used, no problem for that. So 27 से हमें ये भी नहीं समझना कि we can't use public money for religion. We can use it, but for promotion of all the religion. We can't use public money for promotion of any particular religion, and therefore the state cannot take any kind of tax from you, which is more in the nature of a religious tax. But yes, the state can take fees, which may be a religious fee, but for that there has to be a service that you are going to avail for the fees that you might have paid for it. Okay. So this is 27. This is how the state will behave. यानी proceeds हमारा जो tax का है, सरकार उसको इस्तेमाल कर सकता है, but for promotion of all the religion. Plus सरकार हमसे कोई religious tax नहीं ले सकती, religious fee ले सकती है. ठीक है? Now is Article 28 of the Constitution. 28 में ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से स्टेट जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ना. So what is the freedom that you have in Article 28? It is about freedom from attending religious instruction. That is how you are going to avail the freedom, and this freedom would typically mean that how one is going to ensure the freedom from attending any kind of religious instruction. तो 27 से आप ये बात तो समझ सकते हैं कि राज्य बहुत सारे धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करती है, बहुत सारे पिलग्रिमेज को सब्सिडाइज करती है, बहुत सारे पिलग्रिमेज को स्पॉन्सर करती है राज्य. तो ये नॉन सेक्युलर, ये इसको हम नॉन सेक्युलर एक्टिविटी नहीं मानते. सरकार स्पॉन्सर कर सकती है ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं. एंड स्टेट मींस यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, एनीवन. So they might sponsor religious activities, they might sponsor religious pilgrimages, और ये सब सरकार अगर स्पॉन्सर कर रही है, they might build corridors, they might build the pilgrimage routes, maintain it, repair it. Okay, so if the government is spending money into all these areas, they are using public money. But 27 does not say that you can't use public money. 27 is merely saying that this public money has to be for the promotion of all the religion, not any particular religion. क्योंकि जैसे ही हमने particular religion के लिए किया, तो what does it mean? It means that the state is basically showing its bias towards a particular religion, which means then state will have a religious character of its own. In our country, we say that our state do not have any religion, so we don't have a religious character. For us, all religion are equal, and therefore we are equally, spending on the promotion of the people who belong to different religious groups. Okay. Then we have to read Article 28. Article 28 is typically that article which tells us that what might happen
with the Indian Constitution approach when it comes to the issue of religious instruction. यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के मामले में राज्य कैसे बिहेव करेगा, है ना. यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब समझते हैं आप लोग? When we say religious instruction, what does it mean? प्रेयर्स क्या इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं? हो सकते हैं इन अ वे, ठीक है. और क्या? How are we going to do this? Indian Constitution, what it says or what it tries to say in Article 28. How are we going to read it? तो थोड़ा इसको समझते हैं. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पहले होता क्या है, या फिर मैं ये बोलूं कि अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ हमें समझना ही है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस से हम अप्लाई करें. हाउ डू वी अप्लाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. आपने ऐसे स्कूल्स देखे जहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हो? हाँ हाँ, तो अगर देखा है तो मेरे लिए समझाना थोड़ा आसान है. You want to go to a school and in that school religious instruction is provided. Religious instruction मतलब धार्मिक शिक्षा, स्पष्ट, यानी धर्म की शिक्षा, है ना. यानी you are actually not teaching the philosophy of the religion, you are teaching about religion, from the religious scriptures you can say. You are teaching religion, सीधा धर्म की शिक्षा दे रहे हैं आप या पंथ की शिक्षा दे रहे हैं आप. So what is the freedom you have when it comes to Article 28? ध्यान से ये समझना है कि इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है कि किसका पैसा है. जो संस्था चल रही है उसमें किसका पैसा दिया हुआ है, किसने अपना पैसा लगाया है और कितना पैसा लगाया है ना. तो फॉर्मूला क्या है कि 28 से हमें समझना है दैट यू हैव गॉट अ रिलीजियस फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, है ना, और इवन रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से, रिलीजियस वर्शिप से, और देखो सारे इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिखा, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ शैक्षणिक संस्थान में आपको फ्रीडम है कि आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करें या ना करें. रिलीजियस वर्शिप अगर हो रही है तो आप अटेंड करें या फिर ना करें. सो देयर आर specific provisions in Article 28. So we'll try to look at these provisions one by one. So what is the freedom you have? Freedom as to attendance at religious instruction. Religious instruction मेरे स्कूल में दी जा रही है और या फिर मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है, नॉट स्कूल. Even it could be a college, which means I am saying about educational institutions. So certain educational institutions. So the freedom to attend religious instructions or religious worship in certain educational institutions. So what is this freedom that I might have when it comes to freedom from attending religious instruction? या freedom ऐसा लिख दो, from से अच्छा off शब्द होगा, of attending religious instruction. So I am free कि मैं religious instruction in certain educational institution. तो मार्जिन पे हमें पहले क्वेश्चन लिख लेना है. जो हमारा फॉर्मूला, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि whose money it is. ठीक है. So you have got a freedom when it comes to attending any religious instructions in certain educational institutions. So how do you understand this overall statement कि हमें religious instruction से क्या freedom है, यानी कितनी freedom है, हम कहाँ पर free हैं कि हमें नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, कहाँ पर हमारे लिए compulsory हो सकता है या कहाँ पर हमारे लिए optional हो सकता है. So we have these three kind of choices that one has to look at. और इससे हमें पता चलेगा कि इंडियन स्टेट ने अपना क्रेडेंशियल सेकुलर रखा है, which means that the Indian state is telling us that I have no state religion, which means the Indian state will have no state religion. How do I know that? By reading Article 28. क्यों ऐसा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, why am I saying that? तो आप साइड में बस एक यहां पर मार्जिन पे एक फॉर्मूला लिखो, whose money is it. तो ये पैसे की बात है. तो कौन पैसा दे रहा है इन संस्थाओं को, कितना पैसा दे रहा है इन संस्थाओं में, इससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमको कितना फ्रीडम है as to attendance of religious instructions in certain educational institution. फर्स्ट जो
इसका क्लॉज है वो ये कहता है इफ द इंस्टीट्यूशन इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी इसका सारा पैसा कहां से आ रहा है, हुज मनी इट इज, ऑल द मनी इज स्टेट मनी, तो ऐसे संस्था में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। अब अगर मान लो हम ये कहें कि नहीं, सरकार ये कहती कि सारे धर्म की शिक्षा हम देंगे, तो स्टेट शुड हैव गिवन ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो फिर पढ़ाते कब उसको? खाली धर्म की ही शिक्षा देते रहोगे तो पढ़ाओगे कब? इसलिए सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, इसीलिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो संस्था हमारे पैसे से चलेगी, होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, उसमें देयर विल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो इस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का कोई मुद्दा ही नहीं है फॉर दोज इंस्टीट्यूशन विच इज बेसिकली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक, तो फर्स्ट क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि नो रिलीजियस instruction is provided in institution, यानी in educational institution that is, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, होली, यानी पूर्ण रूप से, that is wholly maintained out of state funds. So no religious instruction can be provided in those educational institution which is wholly maintained out of state fund. So does it not show our credential as a secular state where the state have no religion and therefore state has said that जहां पर मेरा पूरा पैसा लगेगा वहां पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि उस संस्था में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप किसी को बताएं, किसी को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाए। ठीक, अब दूसरी बात है कि मान लो एक दूसरा क्लॉज लिखा गया और यहां पे लिख दिया गया कि सपोज there is another institution which is administered by the state, यहां पर हमने ये नहीं लिखा which is wholly funded by the state, which is administered by the state, यानी प्रशासन जो है वो राज्य के हिसाब से है, लेकिन उसका establishment कैसे हुआ है, state ने नहीं किया, it has been established under any trust, endowment, and that trust or endowment requires that there should be religious instruction which should be given। उसको ये जरूरी है कि क्योंकि किसी रिलीजियस ट्रस्ट का हो, किसी रिलीजियस एंडाउमेंट ने बनाया हो उसको, और स्टेट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी स्टेट से उन्होंने एफिलिएशन लिया होगा स्टेट के साथ, है ना, उनके, क्योंकि स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा उनको, एफिलिएशन देगा, तो स्टेट डेफिनेटली इंटरवीन भी करेगा, है ना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर ऐसी संस्था हमारे सामने आ गई, सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, देन व्हाट मे हैपन, तो इसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पढ़ाने की छूट होगी, लेकिन देखो किसके लिए, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इट विल बी बिल्ड बाय अ रिलीजियस एंडाउमेंट व्हिच रिक्वायर्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो कोई ऐसा ट्रस्ट है, एंडाउमेंट है, बॉडी है जिसने एक संस्था बनाई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है, एंड इट इज रिक्वायर्ड दैट दे प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो फिर जो क्लॉज 1 में आपने पढ़ा उसको हम वहां उस संस्था में अप्लाई नहीं करेंगे, यानी वहां पर फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। लेकिन मैंने आपको साफ साफ पहले क्या कहा है कि हमें बस पैसे पे फोकस करना है, हुज मनी इट इज। सो वी आर नॉट लुकिंग एट फंडिंग हियर, वी आर ओनली लुकिंग एट स्टेट एडमिनिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, ये शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्लियर हो गया, अगर स्टेट एडमिनिस्टर्ड है तो यानी स्टेट का फाइनेंस में अभी कोई हस्तक्षेप नहीं है, स्टेट का फाइनेंस में भी हस्तक्षेप कब होगा, जब पूरा फंडेड है, which is wholly maintained by the institution, such institution जो completely सरकार उसको मेंटेन करती है। इसको सरकार मेंटेन नहीं कर रही है, इसको किसने एस्टैब्लिश किया, किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने, किसी एंडाउमेंट ने, और जिसको जरूरत है, यानी कोई वैसा ट्रस्ट होगा जिसकी ट्रस्ट की आवश्यकता है कि हम थोड़ा प्रिजर्व करें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन,
यानी हम प्रोवाइड करें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की छूट है और वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है. यानी अगेन द सेकंड क्लॉज इज आल्सो गिविंग अस अ हिंट दैट you have to focus on finances. So here the state is merely administering the educational institution. It is not wholly funding the educational institution and it is not even establishing the institution. जहां पर wholly maintained होता है वहां पर क्या होता है, स्टेट फंड भी करता है, स्टेट स्टैब्लिश भी करता है, स्टेट उसको ऑपरेट भी करता है ना. यहां पर स्टेट ने उसको स्टैब्लिश नहीं किया, उसको किसी एंडाउमेंट ने स्टैब्लिश किया, और उस एंडाउमेंट ने जब स्टैब्लिश किया तो उसमें उसकी शर्त है कि वो वहां पर एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो दे सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टेट एंड. ठीक है, तो सेकंड क्लॉज में लिखिए. और सेकंड क्या हो गया, सेकंड इज मोर लाइक इट इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन टू व्हाट, टू 28 क्लॉज 1. ये है 28 क्लॉज 2. if an educational institution is administered by the state, but but it has been established under a religious endowment or a charitable trust which requires religious instructions to be imparted, then खास तौर पे इस तरह के संस्थाओं में, है ना, then in these institutions Article 28 clause 1 will not be applicable. फिर अब दूसरी बात यह कही गई कि अगर मान लो कि कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है और जो सरकार से एड ले रहा हो, दोनों कंडीशन है. सो गवर्नमेंट माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम द इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट माइट बी गिविंग एड टू दैट इंस्टीट्यूशन. देन what is it that will apply? The first thing that will apply is कि people who are attending those institutions, which is two ways, which is a recognized by the state, which means state has given the recognition in a due affiliation, state की recognition मिल गई उसको, और state aid भी देता है. आप जानते हैं state provide funds to institutions, हमने पहले ही पढ़ा था कि aided unaided प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही थी, तो यानी सरकारी संस्था नहीं है वो, तो ये तो क्लियर हो गया, वो गवर्नमेंट उसको एड दे रही है, गवर्नमेंट एडेड है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है. तो कोई ऐसा व्यक्ति है which is who is reading into those institutions, suppose, then no person who is attending any such educational institution is required to participate in any kind of religious activities in that particular state. यानी religious worship अगर मान लो हो रहा है, जैसे होता है ना कभी कभी सरस्वती पूजा, काफी institutions में आप देखेंगे they observe a सरस्वती पूजा, है ना, not throughout the country but in some parts of the country. For example, in the eastern part usually you celebrate Saraswati Puja, Vasant Panchami, on that particular day. So goddess Saraswati, because she is associated with wisdom, knowledge, so therefore, you know, she is actually celebrated. Now
even in these institutions, if something of that nature comes up, then you can participate or not participate. That's your choice. Which means no person who is attending any of these institution, as I said, दो चीजें मैंने बताई यहां पर कि जो 3 में लिखा हुआ है कि रिकॉग्निशन है उसको बाय द स्टेट, यानी कैसा इंस्टीट्यूशन है, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ 2 कैटेगरीज है, इसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है या इसको स्टेट ने एड दिया है। दोनों ही सूरत में, मैं ये लिखवा दूंगा बस आप समझने के लिए, इसको देख लीजिए, दोनों ही सूरत है यहां पे। सो एनीवन हु इज अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके, he shall be required to take part in any religious institution instruction or to attend any religious worship that may be conducted in the premises. तो कोई भी व्यक्ति जो इस संस्था में पढ़ रहा है उसको जरूरत नहीं है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है उसको ले, या जो रिलीजियस वर्शिप उसके प्रेमाइस में की जा रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, यानी वो फ्री है, ये कहने का मतलब है। अब दूसरी बात है कि सपोज in such premises which is attached and such person, if he happens to be a minor, तो अगर आप माइनर हैं तो आप अगर अटेंड करना चाहते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस को, ऐसे वर्शिप को, then the consent of the guardian is required if you are a minor. So what you are seeing here is, you are seeing here as an article which is basically telling you that if you are receiving any aid out of the state fund, or if you are reading in education institution which is recognized by the state, then no person who is attending those kind of institution is required to take part or shall be required to take part in the religious worship or in the religious instruction. Plus, दूसरी बात, if somebody wants to attend any religious worship or any religious instruction and happens to be a minor, then the consent of the guardian will be required, है ना। So in these institutions, religious instructions, ध्यान से ये समझने वाली बात है, कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वहां दी जा रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, यहां दी जा सकती है क्योंकि स्टेट का मनी नहीं है ना पूरा, स्टेट केवल इनको एड दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, लेकिन इट इज नॉट होली फंडेड बाय द स्टेट, यानी वहां पर फंडिंग और भी कहीं से आ रही है, प्राइवेट संस्था है उसकी भी अपनी ट्रस्ट होगी, ट्रस्ट के पास पैसा होगा, दे वुड बी गेटिंग द फंड्स फ्रॉम देयर, सो इट इज मैनेजिंग इट्स फंड, स्टेट केवल उसको सपोर्ट कर रहा है, तो स्टेट सपोर्ट कर सकता है ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस को कर देगा जिसमें कोई और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो, ये काम तो राज्य कर सकता है ना अपने पैसे से हर किसी को प्रमोट करना, लेकिन जहां राज्य सब काम खुद कर रहा है वहां सरकार कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी, जहां नहीं दे रहा, केवल एड दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, तो ऐसे में राज्य कहता है कि आप चिंता मत करो, आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कंपलसरी नहीं होगी, आप वहां जबरदस्ती रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते, और अगर आप माइनर हो तो बिना गार्डियन के कंसेंट के तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपका चॉइस है, यू हैव अ फ्रीडम, यू वांट टू टेक दैट, you can do it, if you don't want to take that, there's no compulsion as such. That's the basic idea that comes from Article 28 clause 3, which means that in all these situations, you know, if you are a minor, then your guardian consent is required, and if you are a person attending such institutions which is recognized by the state or which receives funds out of the state, then you can't actually compel a person to take part in religious instructions or for that matter in any kind of religious worship. So I think what is it being said here in this Article 28 clause 3, वो ये कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट फंडेड नहीं है होली, यानी उसमें राज्य केवल एड दे रहा है, दे आर नॉट होली फंडेड बाय द स्टेट, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, मतलब हो सकता है, अलाउड है, लेकिन कंसेंट ऑफ पेरेंट रिक्वायर्ड है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पास ये राइट है वेदर टू गेट दिस और नॉट चूज दिस कोर्स, तो कंपलसरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, स्टूडेंट है आपके पास अधिकार है, आपको अगर चूज करना है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप चूज कीजिए, एडल्ट है तो आप कर लीजिए चूज, एडल्ट नहीं है तो आप चूज करना चाहते हैं तो गार्डियन की कंसेंट लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चूज नहीं करना चाहते, दैट इज इवन इक्वली पॉसिबल, व्हिच मींस यू हैव अ राइट टू चूज और नॉट चूज द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये बात कही गई है, लेकिन कैसे इंस्टीट्यूशन में, विच इज नॉट होली फंडेड बाय द स्टेट, तो अगेन हुज मनी इट इज,
If the state is giving all the money, no religious instruction. If the state is merely aiding, then instructions can be given but can't be compulsory. ठीक है. और प्लस दूसरा कंटेक्स्ट क्या देखा हमने, अगर कोई रिलीजियस एंडोमेंट की बॉडी से ही इंस्ट्रक्शंस बन रहा है जिसको स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वहां पर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है. ठीक है. तो ये बेसिक आइडियाज हमें दी गई कि अगर मान लीजिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमने फुली फंड किया जो कंप्लीट स्टेट मेंटेन्ड है, तो वहां आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं सोच सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार अपने आप को ये शो कर रही है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने फंड किए हैं, सरकार सेक्युलर है, क्योंकि सरकार किसी भी तरह से कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उन इंस्टीट्यूशंस में नहीं चला रही है. ठीक, ये क्लियर हो गया. सो इफ वी आर फंडिंग फुल्ली, देन वी विल नॉट अलाउ एनी रिलीजियस कोर्सेज टू बी रन. ठीक, यानी सरकार कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगी. सरकार जिसमें पूरी फंडिंग करती है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं देगी. लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी संस्था है विच इज नॉट फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड, सरकार उसमें सारा पैसा नहीं दे रही है, तो ऐसी संस्थाओं में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड है, लेकिन आपके पास चॉइस है, कंपलसरी नहीं है. वहां पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़ सकते. और अगर आप माइनर हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंसेंट ऑफ द गार्डियन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड दीज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस received by these institutions, offered by these institutions. Okay, so I think यहां पर क्या किया गया, यहां पर यह किया गया कि सरकार जहां पूर्ण रूप से शामिल नहीं है ना, जैसे मान लो कि कोई ऐसी संस्था है जो सरकार के तरफ से पूरे फंड से सरकार की नहीं चल रही, तो अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, कंडक्ट किया जा रहा है, तो सपोज पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही होगा ना, कोई एक खास तरह का ही होगा. तो अगर वो खास तरह के लोग उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हैं, तो इफ दे वांट दे कैन रिसीव इट. बाकी पर कोई कंपल्शन नहीं है, वो फ्री है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो ना पढ़े. तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो क्रेडेंशियल है वो एकदम क्लियर है. वी विल नॉट बी ऑफरिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बट हाँ, जहां हम एड दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वहां पर अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कोई पढ़ाना चाहता है तो आप पढ़ा सकते हैं, बट हाँ, उसको कंपल्सरी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेक इट कंपल्सरी कि जो वहां पढ़ रहा है उसको कंपल्सन है कि वो आपकी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को पढ़े, वो आप नहीं कर सकते. प्लस माइनर है तो कंसेंट ऑफ द गार्डियन इज रिक्वायर्ड. सो आई थिंक the only thing that we see in article 28 is to maintain the secular character of India's educational institutions, कि हमारे जो educational institutions हैं उसकी जो character है वो secular रहे, है ना. उस character को हम कभी भी religion के साथ जोड़ के ना पढ़ें, कोशिश भी ना करें, because our state is basically in terms of its funding process trying to give a very clear cut secular credential to the Indian state, where they are the ones who only makes all the decisions. So they will not be moving into the religious territory, while others who have formed the institution, they can move into that territory, but they cannot ensure that everybody has to take that instruction compulsorily. ठीक है, that is something which comes from this particular idea, है ना. So ये फिर किस पर निर्भर करेगा, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम है, आपकी विल है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट करो या तो मत करो, है ना. तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फेयर आर्टिकल है which shows the nature of the Indian state, which is showing its credential as a secular state. ठीक है, थर्ड वाला लिखिए. थर्ड, इसी बंद कराना है, ठंड लग रही है सबको, तुम्हें नहीं लग रही ना, तुम्हें भी लग रही है. एसी चलवाया किसने था, एसी तो बंद ही था ना, किसी ने चलवाया था, बोल के चलवाया था. पंखा बंद करने पड़ा तो एसी चला दिया. देखो कितना दिलदार है स्टेट तुम्हारा. इसको बंद कर दीजिए, और भी कहीं बंद करवाना है तो करवा लीजिए. हाँ, बाकी जगह जहां जहां हाथ उठ रहे हैं एक बार चले जाइए वहां. 28 क्लॉज 3, क्योंकि बारिश हो गई ना तो थोड़ा मौसम नासाज है. नो पर्सन अटेंडिंग no person attending any educational institutions, any educational institution recognized by the state
or receiving aid out of the state fund. नो पर्सन को अंडरलाइन कर लो ताकि पता लगे कि नहीं करने का भी इंस्ट्रक्शन है. और receiving aid out of the state fund shall be required to take part in any religious instruction, shall be required to take part. No person attending any educational institution recognized by state or receiving aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. Or if or if such person is a minor, then consent of the parent / guardian is required. Consent of the parent / guardian is required. That is, if the person is a minor, then consent of the parent / guardian is required. Next point, Article 28 ensures that public educational institution funded by the government remains secular and do not impart religious teachings. It maintains the secular character of educational institution funded by the state and to uphold the freedom. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना. And to uphold the freedom of individuals to pursue their own religious views, beliefs, or not to participate in religious activities or instructions. Okay, so this is something that we learn from these areas. अब इसमें
जो डिबेट है वो है कि हम समझेंगे कैसे कि व्हाट इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस टीचिंग। थोड़ा ये समझना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस हैं जहां you will be taught about philosophies of different religion. For example, you are taught about the philosophies of, suppose, Sikhism. You are taught the philosophy of Buddhism. You are taught about the philosophy of Jainism. So you may be given so many courses that are designed which might run into these trouble or problem, where somebody may allege that since you are teaching from certain community philosophy, religious philosophy, so it is a violation of Article 28. So you can actually use this premise of Article 28 कि देखो धर्म की शिक्षा दी जा रही है और क्योंकि फुल्ली फंडेड इंस्टीट्यूशन है तो वो तो दे नहीं सकता, तो आप कैसे ये शिक्षा दे रहे हो, तो इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही एक बड़ा केस है जो हमारी समझ के लिए जरूरी है, इसलिए मैं इस केस के बारे में जिक्र करता हूँ। इट वॉज अबाउट अ डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो जालंधर बेसिकली वहां पर एक कॉलेज है और वहां पर ये केस आता है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है कि यानी वहाँ जो केस का प्रेमाइस है कि यू आर टीचिंग अबाउट द लाइफ ऑफ अ सेंट, है ना, सेंट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट गुरु नानक देव और सम सेंट, एंड you are basically teaching about the teachings of those saints. So if like he is credited with establishing a certain religion, then his teachings is also religious teaching, है ना, ये कंटेंशन था पिटिशनर का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप किसी के लाइफ और टीचिंग्स की एकेडमिक स्टडी करते हैं, है ना, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लाइक गौतम बुद्धा, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महावीर, आज तो महावीर जयंती भी है ना, यानी महावीर जी का आज के दिन ही प्रकटीकरण हुआ था, आप कह सकते हैं। टुडे इज महावीर जयंती ऑल्सो। महावीर जी ही established the Jain religion, so he is credited with establishing a new fold, a new path, a new religious path where many people joined later. So we have uh, a minority population in this country who follow Jainism as well. It's a very progressive community. If you see that community, it's largely a business community, but you would also see that the community does excellent when it comes to academic achievements. So even if you look at your UPSC results and all, you will find so many people with the Jain surname. So it's a very close-knit community. So Mahavir ji is credited with the foundation of that religion. Suppose if I'm teaching a course in the university which is about the life of Lord Mahavir, then can you say that I'm violating Article 28? Because the university is funded by state fully. So this is the question that went to the court, that when you are academically teaching from the life of teachings of great saints, then it is also a violation of Article 28 because it is about the teaching with regards to a particular religion. यानी जिस सेंट के बारे में, लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है या लोग उसके ऊपर किसी तरह का मान लो कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, हायर स्टडीज में तो एक एक पूरा पेपर हो सकता है किसी के लाइफ के बारे में, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली वायलेटिंग आर्टिकल 28, दैट्स द कंटेंशन। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, इफ यू आर एकेडमिकली टीचिंग अबाउट ग्रेट सेंट्स teachings and lives from their lives, then this is just an academic teaching, it is not a religious instruction। जो religious instruction शब्द लिखा हुआ है वो कुछ और है। teaching about the life and teachings of great saint is not religious instruction। so if you are doing a study or a research on the life of Guru Nanak Dev, then it does not mean religious instruction, so it is not violative of Article 28। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया, किसी धर्म के बारे में पढ़ना, that is not religious instruction। so if I am being taught about something from the life and teachings of Prophet Muhammad, that is not violation of Article 28। if I am being taught about something on the life and teachings of Guru Nanak Dev, that is not a violation of Article 28। if I am basically taught something in my school or college which is related to the life of some great saint, maybe Gautam Buddha or Lord Mahavir or Lord Buddha, anyone, if you say, so, but Buddhism does not say that they should be called Lord, so I said Gautam Buddha, but does not mean that I want to see him as like lower in hierarchy. Everybody is phenomenal in their own way, and they have all established something which we now see as like Buddhism is a religion which is today spread to many parts of the world। तो जबरदस्त लोग होंगे जिन्होंने
इसको एस्टैब्लिश किया, इस फेथ को आगे बढ़ाया. बट इफ आई एम बीइंग टॉट अबाउट द टीचिंग्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द लाइव्स ऑफ गौतम बुद्ध, if I am being taught about from the teachings of prominent teachings of Buddhism, the philosophies of Buddhism, it's academic study. It does not mean that I am actually imparting any religious instruction. उसको religious instruction नहीं माना गया. इसलिए ये केस थोड़ा समझने में जरूरत है हमें. फिर religious instructions क्या है? तो कोर्ट ने कहा कि religious instruction would include teachings from religious practices. जो धार्मिक प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी टीचिंग्स हो, रिचुअल्स हो, या कोई ऐसी इवेंट जो रिलीजियस से जुड़ी हुई हो, उनके बारे में अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, then that is religious instruction. So in short I would say, if you are being taught religious philosophy, that is not religious instruction. Philosophy teaching is not religious instruction. That's why you have so many philosophies that you might read which is about all the different religions, and that is not a violation of Article 28 of the Indian Constitution. ठीक है, लिखिए. DAV कॉलेज जालंधर, ब्रैकेट में लिखिएगा जालंधर, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. DAV कॉलेज जालंधर, जलंधर, ये कह रहे हो, नॉट जालंधर, जलंधर. हाँ, DAV कॉलेज जलंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971. Jalandhar versus state of Punjab. Jalandhar should be in the brackets. In this case, the Supreme Court held that the academic study of the life and teachings of great saints does not imply teaching of a particular religion. Does not imply teaching of a particular religion. Full stop. Therefore, the study and research on the life of saints does not imply religious instructions. Therefore, teaching religious philosophy does not amount to religious instruction. Does not amount to religious instructions. Aruna Roy versus Union of India, 2002. Aruna Roy versus Union of India, 2002. इसमें भी कोर्ट ने यही बात बताई कि हम एक सेक्युलर स्टेट है और हमारे यहाँ अगर हम रिलीजियस फिलॉसफी को अपने करिकुलम में रखते हैं तो इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28. यानी इसमें जो ये एक PIL था बेसिकली,
और इसमें ये कहा गया था कि हमारा जो नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाली संस्था है वो उसने ऐसी फ्रेमवर्क बनाई है जो उसकी फ्रेमवर्क वायलेट करती है आर्टिकल 28 को. सो द पिटिशनर हैज सेड दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSC and NCFSE. So she actually raised this petition saying that this framework violates the Article 28 of the Constitution, because in the framework there are so many things which actually is part of violation of religious, or which is basically religious teaching. So the court again reiterated its position, which they have already said this in the Jalandhar DAV Jalandhar case, where they said that there is no violation of Article 28 because what you are instructing, what you see in Article 28, Article 28 does not prohibit any teaching of religious philosophy. So as long as you are teaching religious philosophy, you are basically creating a more value based society. अगर आप समाज में religious philosophy पढ़ा रहे हो, if you are teaching religious philosophy, then you are creating a better society. एक समाज में values ज्यादा मजबूत हो रहा है. Religious philosophy की teaching से you are creating a more value based society. So it is not violative of Article 28 of the Indian Constitution. ठीक है, तो एक बार फिर से कोर्ट ने इसको reiterate किया कि आर्टिकल 28 के इंस्ट्रक्शन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू प्रोहिबिट एनी इंस्ट्रक्शन विच इज अबाउट रिलीजियस फिलॉसफी. तो आप रिलीजियस फिलॉसफी खुल के पढ़ाइए, बल्कि समाज उतना बेहतर होगा जितना ज्यादा हम एक दूसरे के रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में जान पाएंगे, है ना. तो इसे रिलीजियस फिलॉसफी की इंस्ट्रक्शन इज नॉट एट ऑल वायलेटिव ऑफ 28. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज बैंड, दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, and religious instructions would mean that when you start teaching from the scriptures, when you start teaching from the rituals of the religion, so that would amount to be a violation. ठीक है, लिखिए. The court held that Article 28 does not prohibit the teachings of religious philosophy full stop, since our secularism is positive in character, since our secularism is positive in character, our secularism is positive in character, so through such teachings we could develop such teachings we could develop understanding of religion, which would lead to respect towards different religion, तो मैं कह रहा था कि अगर हमें सब धर्म के फिलॉसफी के बारे में पता हो ठीक से, तो इससे क्या होगा, हमारे बीच में जो मतांतर हो जाता है वो भी नहीं होगा. वी विल हैव अ मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स रिलीजन. तो हमारा तो सेक्युलरिज्म वैसे भी बहुत पॉजिटिव है इन कैरेक्टर. हम कोई चीज मना तो नहीं कर रहे अपने सेक्युलरिज्म में, हम सेक्युलरिज्म में बल्कि प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो अगर फिलॉसफी पढ़ाई जाती है रिलीजियस फिलॉसफी, तो दैट इज नॉट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एज पर आर्टिकल 28. सो एजुकेशन अबाउट रिलीजन इज नॉट religious instruction. So education about religion is not religious instruction. अब एक केस है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, which is about the prayers.
काफी स्कूल्स में ऐसे प्रेयर्स होते हैं ना जहाँ यू यूज सम रिलीजियस हाइम्स, है ना, तमसो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, नॉट अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसे जो हाइम्स होते हैं। फिर आप उसमें बताते हो मृत्योर माँ मृतंगमय, इमाप शिवा संतु, तो ऐसी जो हाइम्स होती हैं काफी जगह इसको पढ़ा जाता है रिलीजियस जो असेंबलीज होती हैं, स्कूल की असेंबलीज में। तो एक जो केस है वो इस रिलेटेड है कि क्या ये अलाउड होगा कि you actually ask people to, which means you ask everybody to sing this hymn while the school assembly is in operation. But courts have not yet spoken on this issue and it's still pending in the court of law. तो एक बार वो डिसीजन आता है तो हमारे पास थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस विषय पर कि कैन इट बी कंसिडर्ड, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो नहीं है बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग। तो अगर ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पर पूरी की पूरी फंडिंग स्टेट से आती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, सो केंद्रीय विद्यालय के प्रेयर्स में ये आमतौर पे सुबह सुबह ये प्रेयर होता है, तो उसको चैलेंज किया है, in some petitions you could see that has been challenged. So can it be allowed? Can it be seen to be a case where it is considered to be a violation of 28? So courts have yet to speak over it. Otherwise, this is the general understanding. Even the courts are very clear that merely teaching religious philosophy does not amount to violation of 28. But court ने कहा कि court has reiterated the position that it is even better for the Indian secularism that people will have such knowledge about each other's religion, because it's part of the curriculum. So teaching religion and religious education, they are two different things. So anything that is an education about religion is not religious instruction. That's what the courts have basically been very clear on the issue. Now we have another very, very prominent fundamental right, which is like very citizen specific only. यानी citizen specific कौन से हैं? Citizen specific, हाँ, 15 के बाद सीधा 19, 16 और 20, हाँ, आधा तो छोड़ के क्यों बोल रहे हो? रिवाइज नहीं कर रहे? उसके बाद बोलोगे सर जब पढ़ा तो दिए, सब समझ में आ गया, लेकिन अब कुछ भी माथा के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? तो पढ़ना चाहिए, कभी थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए। तो जैसे कोई छुट्टी हुआ, किसी दिन ब्रेक हुआ, तो उस दिन तो थोड़ा कोशिश करो ना। कल इस टाइम पे क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी, वेरी स्मार्ट। फिर भी तुमने गलत आंसर दिया। अब क्या रिवाइज कर रहे थे? 29 एंड आर्टिकल 30, इसको हम कंबाइंड वे में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल rights. So if you add these two articles, this is the right we have. We have cultural and educational rights. So basically 2930 is a fundamental right which deals with these two set of very, very prominent ideas. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल, स्पेशली जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्निंग कोई बड़ा केस आपके सामने आता है ना, तो इसमें थोड़े केस स्टडीज हमें करने होंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन आवर कंट्री द स्टेट गिव्स यू द राइट टू फॉर्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और किसको मिला यह अधिकार? यहां पर वैसे शब्द हम क्या बोलते हैं कि दिस इज मोर लाइक अ माइनॉरिटी राइट, लेकिन माइनॉरिटी कोई केवल अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि 2930 के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखो, क्या लिखा है इस आर्टिकल में, थोड़ा समझो। हम कभी कभी ये मिस्टेक करते हैं, नोइंगली ये मिस्टेक हो जाती है हमसे। 29 के क्लॉज 1 का पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, और 29 में जो कुछ भी हमें करना है उसका एप्लीकेशन 30 है। एक्चुअली 29 बस स्टेटमेंट जैसा आर्टिकल है,
बट 29 को अचीव कैसे करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू मूव टू आर्टिकल 30. So article 29, 30 both are like connected to each other. If you don't read article 30, then whatever you might get from article 29, it is not to be implemented on the ground, or it is roughly very difficult to implement on the ground. Therefore, you should know that what you want in 29, so that you know that what you have to do. So what you need to do to activate 29, for that you need to read article 30 of the Constitution, because 29 says that three things: any section of the Indian society, यानी any section of Indian citizen. माइनॉरिटी शब्द नहीं लिखा हुआ है 29 में. 29 में साफ साफ क्या लिखा हुआ है? एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, और सिटीजन शब्द लिखा हुआ है. फिर से ये आर्टिकल है जहां नागरिक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इट इज फॉर एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन. प्लस कहां रिसाइड कर रहा हो? रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. क्या अधिकार मिलेगा? विल. और इसके बारे में एक और बात है, ये व्यक्ति कैसा हो? विल हैव अ राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. विच मीन्स इसमें जो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विथ अ डिस्टिंक्ट language, culture or script will have a right to preserve the same. यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार होगा. will have a right to preserve the same. सेम का एक्सप्रेशन का मतलब है they will have a right to preserve their language, culture and script. Language, script and culture. ठीक. So if I have got a distinct language, if I have got a distinct script, if I have got a distinct culture, then the Constitution gives me a right to preserve my language, script and culture. How will I do it? That is not written here. But it just says that you will have a right. But only giving me right is not sufficient. How will I use this right? That is also important. That's why I said that the more important article is to follow. Like 30 is more important than 29, because 29 gives me the right. But how do I apply that right? How do I use that right? The application is article 30 of the Constitution. But the most interesting thing here is that these are the three words used. Language. I have got a distinct language. So I live in, suppose, Karnataka, and I speak Hindi. And they are telling me, ki sikho, Kannada sikho. It's good. I should learn Kannada also. But I want to preserve my language also, because I think that being a linguistic minority in Karnataka, I need to preserve that language. Then, do I have a right to preserve the same? I have a right to preserve the same. मैं एक institution खोलूंगा and I'll preserve the Hindi language over there. है ना? So if I'm in Tamil Nadu, I'm again linguistic minority over there. Some Tamilian is in Uttar Pradesh. They also have the same right, which means I have a language, culture, script. Why script? Why is script so important? Because everywhere around the world, what has been seen, when you have different languages, but if you write something and there is a dominant script, then that script eats all the other script. And every language, they try to write in that dominant script. I'll give an example for that. I speak a language, my mother tongue is a particular language, which is recognized by 8th schedule of the Indian Constitution. So I was sent a copy, a book by an author, and he writes in that language usually. So he's a retired person, but he loves writing. So he's like a avid writer. He keeps writing he's published so many books. So he sent me one. He said that you should also read my new, book that I have written. So I said, fine. So he sent me by a courier, and he called so many times. Mil gaya. Finally, I got that. मैंने कहा हाँ कोई मिल गया. Then I started reading that book. I could not understand even a single word. I just called him कि कौन सा किताब भेज दिया. मैंने कहा ये वाली किताब तो हमारे समझ से बाहर है, लगता है आपने गलती से मतलब कोई दूसरी भाषा की किताब हमको भेज दी.
He said कि आप मूर्ख हैं तो कैसे समझ पाएंगे, किताब पढ़ने के लिए लिटरेट होना पड़ता है, but you are illiterate. Then I realized कि बात तो सही कह रहे हैं. And he told me that this is written in the script, original script. And he said that there are very few people who would be able to decipher or read this script, because you have not been taught this script, so you're not able to read it. You have been reading literature on your mother tongue, but it has been in Devanagari. So Devanagari is what? It's a dominant script. It's a script which is most widely used. But what has happened? There are so many other languages who is now using the same script to even write their language. So what has been lost? This is what is understood by loss of a script. तो धीरे धीरे क्या होगा? Gradually ये स्क्रिप्ट में लिखने वाले लोग नहीं होंगे, उसको समझने वाले लोग नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इस स्क्रिप्ट में कोई इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जा रही है. तो मेरे पास ये अधिकार है कि ये स्क्रिप्ट मैं मरने ना दूं, तो आई कैन एक्चुअली प्रिजर्व माई स्क्रिप्ट. कैसे करेंगे 30 में पता चलेगा, बट आई कैन प्रिजर्व द स्क्रिप्ट सो दैट एटलीस्ट द स्क्रिप्ट सर्वाइव्स. बिकॉज इन दिस नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ रियलिस्टिक एजम्पशन, है ना. दुनिया में ऐसे ही होता है. इफ यू लुक एट द रोमन स्क्रिप्ट, इसमें इंग्लिश लिखी जाती है. नाउ मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज